Hey guys, welcome to my channel Rhyme with Fun. Today we are going to read chapter number 15. Okay, so the chapter name is The World of Bird. Then take the take the birds have you seen? I have basically seen this and this and this and this. I've never seen this bird and now we are starting the chapter. They have one beak with two nostrils, two eyes, two wings, and two legs with claws. Their beak, their beaks are hard with sharp edges. So basically, they have one beak with two nostrils. The beak is this that is the beak, and nostrils means the nose holes. That's the nostrils, and the eye, two eyes. They have two eyes one this side and one another side. Two wings. They have two wings. That is called wings, and okay. Now the next line is and two legs with claws. Basically, the claws is like panja, which we says in Hindi panja. Then legs, that's the claw, and that is the legs. That is the leg. And next is with their beaks are hard with sharp edges. That's the beak. It's much hard, like a turtle shell, and with sharp edge. That's too much sharp. And edge, edges mean like that is my finger edge, and that's my pen edge. Then special feature of bird. A bird has a streamlined body. uh, Basically the meaning of streamline, that's in the body there's too much curve, like that is also curve, and there's curve, we can say that's body curve, which helps us to cut through the air, like जैसे कोई आंधी तूफान आया, like cyclone come, they can easily fly in it, but that's why they moving it like that with the air pressure, but they can survive in it. And then it has wings. Uh, it has wings. The wings are attached to the body with the help of muscles. They also have wings, which I told it. That's the wings, and like muscle is like body, and then the wing is attached by muscle. Okay, then the wings are attached by muscles. जो wings होते हैं वो muscle से attached होते हैं, and then these muscles help us to move the wing up and down and forward and backward. The muscle help wings, जो मसल है वो विंग्स को हेल्प करते हैं ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, आगे और पीछे जाने के लिए. Okay, then feather are attached to the wings. They are talking about the feather. The feather are attached to the wings. You can see in the picture these are the feathers. A bird has two types of feather. What is saying? The birds have two types of feather.
ओके, जो बर्ड्स होते हैं उनके पास दो तरीके के फेदर होते हैं, और डाउन फेदर इज दिस, दैट इज द डाउन फेदर कवर द बॉडी। डाउन फेदर जो होता है वो बॉडी को कवर करता है। दे आर स्मॉल एंड फ्लफी। They are small and fluffy, like a cushion is a fluffy। वैसे ही जो feathers होते हैं वो fluffy होते हैं। And then they help the bird to keep warm। और वो जो feathers होते हैं वो bird को गर्म रखने में भी help करते हैं। Like the bird gives an egg and he sit on it and he gives heat to the egg, and then what's the next line? Flight feather is basically this. Flight feather are attached to the wings। Flight feathers होते हैं वो wings के साथ attach होते हैं। They are flat and long। वो जो होते हैं वो एकदम फ्लैट होते हैं, एकदम प्लेन एंड लॉन्ग, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। दैट इज फ्लैट एंड लॉन्ग, छोटा और बड़ा। देन दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई। जो फ्लाइट फेदर होते हैं वो बर्ड को उड़ने में मदद करते हैं। देन द बर्ड्स टेल made up of feather, it helps the bird to change direction while flying। Basically the bird's tail made up of feather। जो birds की tail होती है वो feather से बनी होती है। Like that's the tail and that's covered by feather। And then the second line is bird to change। It helps the bird to change direction while flying। मतलब वो मदद करते हैं बर्ड को उड़ते वक्त डायरेक्शन चेंज करने में। Like bird is flying and that's the wings, okay, and is flying so he can take turn from this and this side। And then fourth line is the bird fifth line is the bones of a bird are hollow and so the body hollow and so the body it's very light, like the bones of a bird। जो bird की bones होती हैं होल, उनमें तो छेद होते हैं, होल होते हैं, होल अंदर से खाली होते हैं, खोखले। एंड देन sorry I'm just confusing between then and so the body it's very light। वो जो होते हैं वो वेरी लाइट होते हैं, मतलब कि बोन बहुत हल्की होने की वजह से बोन मतलब बर्ड बहुत लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है, so that फिर वो आसानी से फ्लाई कर लेते हैं। This helps the bird to fly, which line I've said that this helps the bird to fly। जो बोन्स होते हैं वो हॉलो की वजह से वेरी हल्के हो जाते हैं, फिर बर्ड जो होती हैं वो वेरी हल्के हो जाते हैं, फिर वो आसानी से फ्लाई कर लेते हैं। देन टाइप्स ऑफ बर्ड, there are many types of bird। Flying birds, most birds can fly, the wings to fly। Flying, most of the bird can fly। बहुत सारी बर्ड फ्लाई कर सकती हैं, जैसे कि pigeon, this bird, मैना and swallow and peacock, and I didn't know the name, and that is Cosworth। He cannot fly and kiwi cannot also fly, and emu also, and penguin। They
four animals, they can't fly, and most of the animals can fly like these. Okay, and मतलब कि जो बर्ड्स होती हैं, बहुत सारी बर्ड फ्लाई भी नहीं कर सकती, जैसे कि कीवी एंड एमू, कॉसवरी एंड पेंगुइन, दे कांट फ्लाई एंड fly. The wings of flying birds are sharp to provide, oh sorry, that's the shape, to provide left, allowing them to fly. Okay, the meaning of this line is just say one pigeon and you came just behind it, he's scared and he can fly like, because his wings are sharp shaped like that, they can fly. जैसे कि वो जो प्रोवाइड मीन्स जैसे कि वो लिफ्ट की तरह, जैसे लिफ्ट ऊपर जाती है वैसे ही जो बर्ड के विंग्स होते हैं वो बर्ड को ऊपर ले जाने में उसकी मदद करती है. Ability to fly helps them to hunt for food. Ability to fly helps them. What's the meaning of the line? We are on this line. Ability to fly helps them to hunt for food. इसका मतलब होता है एबिलिटी जो होती है, जैसे कि मेरे पास खाना खाने की क्षमता है तो उसको बोलते हैं क्षमता. एबिलिटी देन उड़ने की उनके पास क्षमता है जो उनको मदद करते हैं खाना खोजने में, जैसे कि फूड खाना खाने के लिए, एस्केप एनिमीज एंड टेक देम अवे फ्रॉम बैड वेदर. और हंट का मतलब होता है शिकार करना. ओके, सो एनिमी, एस्केप एनिमी लाइक वी कैन ऑल्सो से एनिमीज जो उनके दुश्मन होते हैं उनसे बचने के लिए, एस्केप मतलब होता है उनसे बचने के लिए. एंड टेक देम अवे फ्रॉम द बैड वेदर, जो उनके विंग्स होते हैं, उनकी एबिलिटी टू फ्लाई होती है, वो उनको मदद करती है जैसे कोई ख़राब वेदर, जैसे रेनिंग हो रही है, उनसे दूर ले जाने के लिए कि वहाँ से दूर चलोगे, वहाँ बारिश हो रही है. ओके, द फ्लाइटलेस बर्ड का मतलब होता है जो उड़ नहीं सकती. इससे पहले हमने फ्लाइंग बर्ड्स के बारे में बताया जो उड़ सकती थी. फ्लाइटलेस बर्ड हैव हैवी एंड सॉलिड बोन्स एंड सो कैन नॉट फ्लाई. वो जो फ्लाइटलेस बर्ड होती हैं जो उड़ नहीं सकती, उनके पास बहुत ज़्यादा भारी बोन्स होती हैं तो इसलिए वो फ्लाई नहीं कर पाते. Many of them are found in places where there are few enemies to escape from. इनकी जो हड्डियाँ होती है, सॉलिड मतलब जो होता है, उनकी हड्डियाँ ना भरी हुई होती हैं और तो ऐसे इस प्लेस पे पाए जाते हैं जहाँ इनके जो एनिमीज़ होते हैं वो बहुत कम होते हैं और कि ये जो हैं ये अपने घर जल्दी से छोड़ के ना जाएं. These birds are fast running, a good swimmer. Example of flightless bird are ostrich, crossbill, kiwi, rahi, emu and penguin. जो फ्लाइटलेस बर्ड होती हैं वो बहुत तेज़ी से भाग सकती है, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, उनकी बोन मोटी होती है और वो जो होते हैं वो बहुत अच्छे से स्विम भी कर लेते हैं. लाइक अ पेंगुइन और अ डक, दे कैन इजीली स्विम इन द वाटर एंड सॉरी कैमरा गिर गया. Hope you guys enjoyed my video. If you want another video on birds, tell me in the comment section and like and share and subscribe. Bye bye. Have a nice day.